Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is which of the following is obtained by condensation polymerization. यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, पॉलीथीन, फिनॉल, फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, टेफ्लॉन और नाइट्राइल रबर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पॉलीथीन होता है ये इट डजंट अंडरगो कंडेंसेशन. टेफ्लॉन जो होता है यहाँ पे हमारे पास CF2 डबल बॉन्ड CF2 वाली बॉन्ड होती है, तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन इट डजंट अंडरटेक कंडेंसेशन. हमारे पास नाइट्राइल रबर जो होता है वो नाइट्राइल रबर हम लोगों को ब्यूना एस प्लस एक्रिलो नाइट्राइल के साथ बनता है, तो ये भी जो है हम लोगों का कंडेंसेशन अंडर को नहीं करता है. जो फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन है, दिस इज आल्सो नोन एज बेकेलाइट पॉलीमर, तो ये जो होता है इट अंडरगोस कंडेंसेशन. लेट्स सी हाउ. तो यहाँ पे हमारे पास एक फिनॉल ग्रुप है, इट रिएक्ट्स विथ CH2 double bond O, so we get a compound and here will be having an phenol group, will be having OH, and here will be having CH2OH. Okay, so here it will react again with N, and here will be having a benzene ring again, and here will be having OH, and here will be having CH2. Okay, so this is a condensation polymer, so here it undergo condensation polymerization. Okay, so what will happen over here? Here the water molecule will be removed from here. Okay, so for example this water molecule will be removed, H2O. So this is the water molecule which will be removed. Okay, so here what product we'll get? The product we obtain will be something like this. Here we'll be having OH group, here we'll be having CH2 group, and here we'll be having CH2 groups, and again here it will be bonded with this, and here we'll be having a compound something like this. Here we will be having OH group, and here we'll be having CH2 group, and so on. It will have a condensation type. It will be a condensation type of a polymer. Okay, something like this means chain reaction. So this is the Becquerelite. So here we can say that option number C is the correct option. I hope the concept is clear.